Why monsoon is so harsh on our hair? Hey, what's up, beautiful people? Welcome back to our channel Active, and my name is Rupali. Today, I wanted to talk about the most searched topic on internet: how to take care of your hair during monsoon season. What kind of problem we actually face during monsoon? Brittle hair, dry hair, unruly, unmanageable hair, and even itchy scalp and dandruff, etc. So, in this time, I'll be talking about how to take care of your hair during monsoon. Why monsoon is so harsh on our hair? To start off with little technicality, the chemical structure of our hair makes it very sensitive to airborne hydrogen. जिसका मतलब ये है कि मॉनसून के टाइम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है और एयर में जो हाइड्रोजन होता है हमारे हेयर क्यूटिकल में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। देन वो इरप्ट होता है, इरप्ट होके हमारे बालों को वो फ्रिजी लुक देता है। Another reason that worsen the problem is the presence of environmental pollution in the rainwater, which turns causes us fungal infection in the scalp and which weakens the root and causes hair fall. जिसका मतलब है कि बारिश के पानी में जितना भी environmental एयर में जो pollution है वो रेन वाटर में एब्जॉर्ब होके आपकी स्कैल्प पे जाके फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो रूट है वीक हो जाते हैं और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। I have mentioned a lot of times in my previous videos also, staying hydrated is very important for your hair and skin both. So have at least 8 to 12 glasses of water every day. What water does, it flushes out all the toxins from your body, which can otherwise lead to fungal infection. Cut down on your caffeine because it dehydrates and causes hair fall. Have a lot of fresh fruits and add leafy vegetables, whole grains and protein-rich foods in your diet to tackle hair fall. And do not forget to have vitamin C in any form. You can have amla juice and vitamin C tablets. Monsoon can take away all the natural luster and moisture from your hair and makes it look frizzy, dry and lifeless. So good hair oil massage can do wonders to your hair. And how you have to do it? In inversion method. So what is inversion method? Inversion method होता है जब भी आप head on position करते हैं ऑयल मसाज करने के लिए, जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपकी स्कैल्प तक आता है और जब आप ऑयल मसाज करते हो तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी रूट में जाके रूट को स्ट्रेंथन करता है, उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। Always use sulfate and paraben free shampoo and wash your hair twice in a week and if required wash only once in a week. I know आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि wash your hair every alternate days, but मानसून टाइम में आपके हेयर रूट्स ऑलरेडी इतने वीक होते हैं कि अगर आप जितनी बार वॉश करेंगे आप अपना हेयर फॉल देखेंगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। सो ट्राई एंड वॉश ओनली व्हेन इट्स नीडेड। Don't comb your hair too often, only when it needed, and when needed, only use white tooth comb. Refrain yourself from using chemically treated hair styling products because it can lead to a lot of dandruff and dry hair, and in some cases, it can lead to severe hair loss. Do not stress out. No matter how good you eat and how good products you're applying in your hair, you will lose more hair due to hormonal imbalance caused due to stress. And even a research says that it's okay to lose 50 to 100 strands in a day. So do not count your hair, alright? Stay positive all the time. Key ingredients are ginger, onion and baobab and camphor and coconut oil. Ginger क्या करता है? Ginger contains ginger oil which helps to fight free radicals, or you have to keep them away because it can damage your hair cells and causes a lot of thinning. तो free radicals को आपको दूर करने के लिए आपको ginger use करना होता है. Onion has a lot of sulfur, so which nourishes your scalp and promotes your hair growth. बायोबैब आई नो काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बायोबैब एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें काफ़ी सारे कंडीशनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें एक ऐसा एसिड होता है जिसको बोलते हैं लेनोलिक एसिड विच रिटेन मॉइस्चर इन योर हेयर। जैसे मैंने आपको सेज ऑयल, कैम्फर ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में भी बताया था। आई एम श्योर यू वुड नो द बेनिफिट्स ऑफ सेज ऑयल। सेज ऑयल डिलेज हेयर ग्रेइंग एंड ऑल्सो कैम्फर ऑयल हैज़ लॉट ऑफ कूलिंग प्रॉपर्टीज। एंड टॉकिंग अबाउट कोकोनट ऑयल हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, you would know that.
आप ये की इंग्रेडिएंट्स घर में ही बैठ के अपना होममेड सोल्यूशन बना सकते हैं. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेडीमेड सोल्यूशन, आई वुड recommend our Active Healthy Roots hair care range, which has hair oil and also ultra conditioning hair shampoo, which has no mineral, no sulfate and paraben, and we also have hair growth hair mask. I hope this video was helpful, and if you still have any question, please leave down in the comment section. I will definitely answer them shortly. For all the viewers who are watching my video, we have a small giveaway. The 5 lucky winners will get a chance to win our Active Healthy Roots hair care range. So all the terms and conditions are mentioned in the description box. So do not forget to check out. So we'll see you soon. Stay safe and stay healthy.